So good morning everyone. My name is Abhay Singh and I welcome you all in today's video analysis of the Hindu. Today is 5th of October 2024 and we'll start with the first major news headline for the day. So the first major news headline is coming all the way from Chhattisgarh, where security forces have killed at least a minimum 28 Naxalites in a major operation. Now this particular year 2024 is quite a year in which security forces has taken on the Naxalites. This was the second highest tally of Naxals casualties in any operation in this state. This year total 185 Naxalites have been killed in the various operations conducted by the security forces. Now let's look at some of the operations which have been conducted by the security forces in the state of Chhattisgarh. So the first one is Narayanpur, then Bijapur, then Kankar, then Dantewada, and yesterday it was Bastar. Right, so these are the major operations which took place in the state of Chhattisgarh, and in this year total 185 insurgents or Naxalites have been killed by the security forces. So this is one big news that you just have to relate this particular news item with one important bill which was brought by the state government of Maharashtra, which is known as Maharashtra Special Public Security Bill 2024. That particular bill was also focusing on one of the most important issue, that is the problem of Naxalism, but that particular bill was focusing on the problem of urban Naxalism. So these are the things which are important for us to understand. Now we are moving into the next important news headline for the day, and basically this particular news headline is also very important for us. So our external affairs minister Mr. S Jaishankar is going to visit the state of Pakistan to attend the uh, meeting of the Shanghai Cooperation Organization, which is scheduled to take place on 15th and 16th of October. Now, in the first such visit in nearly a decade, External Affairs Minister S. Jaishankar will travel to Islamabad to attend the heads of government meetings of the Shanghai Cooperation Organization on October 15th and 16th. The center announced on Friday. So, with this announcement, it has been confirmed that from India, it will be the External Affairs Minister S. Jaishankar who will visit the state of Pakistan. Now, he will visit the state of Pakistan to attend the head of government meeting of the Shanghai Cooperation Organization, which is scheduled to take place on 15th and 16th of October. Earlier, the state of Pakistan or the government of Pakistan has invited Narendra Modi to attend this particular meeting, but due to some issues, Prime Minister is not able to visit. So, in place of Narendra Modi, our Prime Minister, Mr. S. Jaishankar will travel to Islamabad, and the last time when any Indian leader traveled to the state of Pakistan, it was our former external affairs minister, Sushma Swaraj, who visited the state of Pakistan in 2015 to attend the Heart of Asia conference and bilateral talks. So you have to remember the name of Sushma Swaraj as well, because she was the last leader before the external affairs minister to visit the state of Pakistan to attend the Heart of Asia conference and bilateral talks. Now the next important news is coming all the way from Supreme Court, where Supreme Court has taken one of the most important steps and has constituted one SIT special investigation team with two CBI officials to probe the claim which was raised by the Chandrababu Naidu. And basically the allegations which were made by Chandrababu Naidu on 20th September 2024, that the prasadam which is served at the Tirumala temple is have some portion of adulterated ghee. So this is one important fact that you have to keep in mind. Now the Supreme Court of India has constituted a 5-member special investigation team with two Central Bureau of Investigations officers. Now this particular SIT will replace the SIT or the committee which was constituted by the government of Andhra Pradesh, and this particular step was taken by the Supreme Court to make sure that the people have complete reliability on these issues. Now the allegations made by the TDP were against the YSRCP regime. So to remove the पॉलिटिकल बायसनेस को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है कि अपने से एक स्टेप लिया है और एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम फॉर्म की है. इस स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम में 5 मेंबर्स हैं, जिसमें से 2 मेंबर्स होंगे सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की तरफ से. नाउ वी आर मूविंग इनटू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम फॉर द डे, एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम फॉर द डे इज
Now, junior doctors withdraw, cease work, warn of fresh strike if demands not met. So, the protesting resident doctors of West Bengal on Friday decided to call off the full cease work stir and resume duty Saturday onwards. So, this was the kind of protest which was done by the junior resident doctors, and they have basically decided that they will call off the call of the strike, and they will resume their duties from the Saturday onwards. Now, this is also very important. Now, the key accused have been presented in the हाथरस स्टैम्पेड केस. हाथरस स्टैम्पेड केस हुआ था, उसमें जो 9 मेजर अक्यूज हैं उनको प्रेजेंट किया जाएगा कोर्ट में. एंड इंटरेस्टिंगली और सरप्राइजिंगली the person who was presiding that whole conference or the gathering, the Bhole Baba or the Baba who we उनको बेसिकली क्या किया गया कि उन्हें इस पर्टिकुलर चार्जशीट में इंक्लूड नहीं किया गया, उन्हें चार्जशीट से बाहर रखा गया. नाम क्या था उनका? नारायण साकार हरी. नारायण साकार हरी जी को उस पर्टिकुलर चार्जशीट से बाहर रखा गया. उनके अलावा जो 9 अक्यूज थे उन्हें कल कोर्ट के सामने प्रेजेंट किया गया. Lokayak police inspect sites allotted to Karnataka CM's wife. So there have been a recent development in Mysuru Urban Development Authority case, where 14 sites have been allotted to the wife of the Karnataka's chief minister, Mr. K. Siddharamaiah. Now the Lokayak police have started to inspect those 14 sites. Though these particular sites have been surrendered by the wife of the Karnataka Chief Minister S. Siddharamaiah, but once the process starts, once the investigation starts, अभी investigation complete होकर के ही रहेगी. दो जो sites, जो controversial sites हैं, जो alleged sites हैं, जिनको अलॉट किया गया था चीफ मिनिस्टर की वाइफ को, वो साइट्स उन्होंने सरेंडर कर दी हैं. बट ये इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट रहेगी और लोकायुक्त पुलिस ने इंस्पेक्शन भी स्टार्ट कर दिया है. Now we are moving into the next important news headline. A division bench of the Kerala High Court on Friday asked the union government to respond to a statement that no amount has been released from the NDRF, National Disaster Response Fund, and the Prime Minister's Relief Fund for providing relief to those affected by the landslides in Wayanad on July 30th. So recently, 2 judges or the division bench of the Kerala High Court has issued or asked the union government to respond to a petition which basically claimed that till date no amount have been issued or released by the National Disaster Response Fund and Prime Minister National Relief Fund से एक भी पैसा रिलीज नहीं किया गया है केरला के लिए. जो बहुत ही ट्रैजिक लैंडस्लाइड हुआ था 30th of July 2024 को केरला में, जिसमें नियरली 250 पीपल हैव लॉस्ट देयर लाइफ और 41 पीपल आर स्टिल मिसिंग. सो उस चीज़ को लेकर के एक पिटिशन फाइल हुआ था कि अभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई फंड रिलीज नहीं किया है. इस चीज़ पे क्लैरिफिकेशन मांगा है केरला हाई कोर्ट ने. 2 जजेस की डिवीजन बेंच एक कॉन्स्टिट्यूट की गई थी. 30th जुलाई 2024 को ये लैंडस्लाइड आया था वायनाड में, जिसमें 2 गांव पूरी तरीके से बह गए थे. नाउ Now we are moving into the editorial part of today's newspaper. So we have 2 editorials with us to cover. So the first editorial is related to the tragic landslide which occurred in the Wayanad on 30th of July. So what are the various geographical and climatic reasons behind this particular landslide, and is Karnataka is in the urgent need to identify these risk zones. So Kerala has to identify these zones as soon as possible, so that a proper mechanism or a proper method can be developed to avoid these kind of situations. So 30th July 2024 से ये इशू स्टार्ट हुआ था. वायनाड के 2 गांव मुंडाकाई एंड चूरामाला में ये लैंडस्लाइड आई थी, जहां पर बहुत ही मेजर और ट्रैजिक इवेंट एक्सीडेंट था, जिसमें 231 पीपल एंड 41 आर मिसिंग. सो 231 पीपल का जो ये डेटा है, ऑफिशियल डेटा है, और 41 पीपल अभी भी मिसिंग है. एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि 2 गांव पूरी तरीके से बह गए थे, और उसके बाद जो गवर्नमेंट का डेटा है दैट इज ऑफ 231 पीपल हैव डाइड एंड 41 पीपल आर मिसिंग. नाउ नो लॉन्गर रिलेटिवली डिजास्टर फ्री.
With the sea to its east and the Western Ghats to its east, Kerala used to be considered a relatively disaster-free zone. Its development activities have taken place on the premise. So now earlier the premise was that Kerala is situated in a disaster-free zone, but in the name of development, a lot of a lot of things have been, a lot of tinkering have been done with the natural resources and the natural adjustment. So this particular tinkering with the natural adjustment have removed this particular premise that Kerala is situated in a disaster free zone. Settlements are distributed throughout the state from the coastline to the steep hill slopes. Kerala is perhaps the only state where human settlements have sprung up along the coastal line. Along with settlements, road and other infrastructure have been built with complete disregard for natural drainage and slope stability. So now the more human intervention is causing these kind of problems in the name of development, we are continuously hurting the natural resources and the natural sentiment as well. So somehow we are not, see, the best thing about the nature is that we cannot control the natural forces. Now in the name of development, you are hurting those sentiments again and again. Now the nature is paying back you in the बेस्ट पॉसिबल वे, क्योंकि आप अगर नेचर को डिस्टर्ब करेंगे सो नेचर विल डिस्टर्ब यू. इट इज अ काइंड ऑफ अ टिट फॉर टैट मोमेंट. ठीक है, अब देखिए कि आपने बहुत सारा कंक्रीट बिछा दिया है कि हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, बहुत डेवलपमेंट कर रहे हैं, बट आपको ये भी चीज़ देखनी होगी कि जो नेचुरल ड्रेनेज क्रिएट होता है, जो नेचर अपने आप से खुद वो ड्रेनेज सिस्टम में क्रिएट करता है, आप उसे अफेक्ट नहीं कर सकते हैं. फिर जो केरला में पूरा वो जो स्लोप स्टेबिलिटी है, अब क्या हो रहा है कि पहाड़ काट के आप रोड बना रहे हैं. अब उस पहाड़ काट के रोड बनाने की वजह से क्या हो रहा है कि जो स्लोप्स का इम्बैलेंस, स्लोप्स में बैलेंस होता है, वो बैलेंस क्या हो जाता है, डिस्टर्ब होता है. ठीक है, द नेचुरल एडवांटेज ऑफ बीइंग रिलेटिवली डिजास्टर फ्री सीम्स टू बी waning. In the last few decades, the intensity and frequency of disasters have increased. Kerala has 3 distinct geographical zones, and all 3 are facing disasters, especially floods and landslide. Coastal erosion, a regular phenomenon, has affected more than 250 kilometers of the total coastal length of 590 kilometers in this state. So this particular fact is important for your examination, that Kerala has a total 590 किलोमीटर का कोस्ट लाइन केरला से क्रॉस करता है. और इस 590 किलोमीटर का जो कोस्ट लाइन केरला से क्रॉस करता है, इसमें से 250 किलोमीटर का कोस्ट लाइन क्या है, इसको डायरेक्ट इंपैक्ट हुआ है जो ह्यूमन इंटरवेंशन हो रहा है या अलोंग द कोस्ट लाइन जो हमने डेवलपमेंट किया है, उससे 250 किलोमीटर आउट ऑफ 590 kilometers have been severely affected. Besides, sea surge has affected different parts of the coast. The lowlands and midland suffer from floods. Parts of the lowland surroundings of the Wamband lake get inundated during every monsoon. So basically क्या हो रहा है कि केरला में दो तरीके के नेचुरल डिजास्टर काफी ज्यादा प्रोमिनेंट हो गए. One is this particular floods and landslide. International Meteorological Organization described the Kerala floods of 2018 as the floods of the century and attributed the disaster to climate change. Now International Meteorological Organization जो फ्लड आया था 2018 में, उसको डिक्लेयर किया था फ्लड्स ऑफ द सेंचुरी. और इन सारे फ्लड्स ऑफ द सेंचुरी का मेन रीजन क्या था, क्लाइमेट चेंज. क्लाइमेट चेंज की वजह से बेसिकली क्या हुआ था, ये जो 2018 में केरला में फ्लड आया था, ये हुआ था, ऐसा कहना है इंटरनेशनल मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का. और एक इंपॉर्टेंट चीज आप लोग और याद रखिएगा, दिस इज वन इंपॉर्टेंट फैक्ट दैट यू हैव टू रिमेंबर इन, like you have to remember that the 2018 floods का जो रीजन था वो क्लाइमेट चेंज था. और क्लाइमेट चेंज का रीजन कौन है, हम है. और हम कैसे रीजन है, क्योंकि हमने ह्यूमन डेवलपमेंट के नाम पे पूरी तरीके से जितना हम डिस्ट्रॉय कर सकते थे, जितना नेचुरल रिसोर्सेज को हम अब्यूज कर सकते थे, हमने उतना किया है. लैंडस्लाइड इन्वेंट्री मैप नीडेड. नाउ Wayanad, located to the east of the Western Ghats bordering the Mysore Plateau, is characterized by deep gorges and ravines. Like the river Sharavati, the Chaliyar also originates in the eastern sides of the Western Ghats. Both these rivers cut across the mountain range and debouch into the Arabian Sea. In spite of the easterly tilt of the Wayanad-Mysore plateaus, this can be attributed to the existence of tectonic factors. A spatial correlation exists between tremors and landslides. Now there is this direct correlation between the tremors which we felt because of the earthquake. So there is a direct correlation between these two events. The ongoing debate shows that there is a gap in understanding the incidence of the landslide in this region. Now if we are not able to control the continuous landslides which are taking place in Kerala, this then it will directly impact the other things as well. And one important thing that we have to remember, that if we have to establish a clear balance between the various things.
Now due to rapid warming of the Arabian Sea, there is an increased risk of extreme weather and climate events such as floods, heat waves and cyclones. The heat contents of the Indian Ocean has risen rapidly since 2000. So they basically क्या हो रहा है कि जो सी है इट इज़ कॉन्टिन्यूसली वार्मिंग, इसमें जो इसका टेम्परेचर है, जो सरफेस टेम्परेचर वो कॉन्टिन्यूसली बढ़ रहा है, इसकी वजह से जो इस पे इम्पैक्ट पड़ रहा है वो बहुत ज़्यादा है और केरला को इसके डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेज देखने पड़ेंगे। अब देखिए ग्लोबल एक एटलस आप क्रिएट कर सकते हैं या एक प्रॉपर आप मैपिंग कर सकते हैं इन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कि कौन कौन से मेजर एरियाज हैं जहाँ पे लैंडस्लाइड आ रहा है, इसका प्रॉब्लम क्या है, और वहाँ पर जब लैंडस्लाइड्स नहीं आते थे और अब जब लैंडस्लाइड्स आ रहे हैं तो वहाँ पर ह्यूमन इंटरवेंशन का कितना बड़ा रोल है, और ह्यूमन डेवलपमेंट के नाम पर या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पे वहाँ पे क्या क्या चीज़ें की गई हैं, फिर आप पॉइंट्स को इजीली कोरिलेट कर सकते हैं एंड यू कैन फॉर्म अ क्लियर स्ट्रैटेजी। नाउ the occurrence of the staggered events of floods and landslide and simultaneous landslides on the either sides of the hill range as in Wayanad and Vilangad this time and Purthumala and Kavalpalla in 2019 also warrant elucidation. So basically ये पास्ट में जो इवेंट्स हो चुके हैं उनको एक रेफरेंस पॉइंट मान करके आपको समझाने की कोशिश की जा रही है कि कैसे चीज़ें हमें चेंज करनी है, कैसे हमें बहुत क्लोजली और मेटिकुलसली चीज़ों को ऑब्जर्व करना है ताकि हम एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी फॉर्म कर सकें। एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी फॉर्म करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर आप स्ट्रैटेजी नहीं फॉर्म करेंगे तो ये जो सिविल कैजुअलिटीज़ हैं ये डे बाय डे ऐसे ही नेचुरल डिजास्टर्स की तरफ जाती रहेंगी। सो दिस इज वन इंपॉर्टेंट आर्टिकल दैट वी हैव डिस्कस टुडे। नाउ अंडर दीज सर्कमस्टांसेस there is a need for a paradigm shift in the disaster management practice which are mostly reactive top down and revolve around rescue, relief and rehabilitation. Now the Sendai framework for disaster risk reduction provides guidelines for the disaster risk reduction. Now we have to focus on the Sendai framework for the disaster risk management, and we have to follow the guidelines of the Sendai framework for disaster risk reduction to avoid these kind of natural disasters. Now we need to understand the risk of disaster. So this is the closing this might be the closing paragraph. So ये closing paragraph है। we need to understand the risk of disaster. We need to understand the risk of the disaster, strengthen disaster risk governance to manage the risk of disaster, invest in disaster risk reduction for resilience and enhanced disaster preparedness for effective response to the build back better. So these are the various things we have to invest in technologies, or we have to invest in those methods which will help us in reducing the disaster risk, and we have to also follow the guidelines of the Sendai framework. Now first, Kerala needs to work out disaster risk zones based on the multiple criteria covering both physical and social components within a social ecological framework with the help of subject experts, and generate a permanent database. So basically this is the best possible solution, that you consult with the expert, you take each and everything into account which is actually necessary. Now and after taking these things into consideration, you have to create a permanent database, you have to create a permanent or generate a permanent database जो आपकी actually में help करेगा to avoid these kind of natural disasters. So with this we have completed the first editorial for the day. Now we are moving into the second editorial, which is basically, now this particular article is factually not very rich, but this particular article tells us that what kind of situations are prevailing in Gaza and how Israel have affected the civilian lives of the people who are living in Palestine and Gaza Strip. Now I am not supporting neither I am supporting Israel nor I am supporting the people who are living in Gaza. This is one video analysis, so I'll try to be I'll try to be neutral here. I'll just explain what have been डिस्कस्ड बाय द फरहात मंटू ने क्या डिस्कस किया इस पर्टिकुलर आर्टिकल में, सिर्फ हम लोग उसी चीज़ पे फोकस करेंगे। सो ये आर्टिकल स्टार्ट होता है एक 17 ईयर ओल्ड बच्चे की स्टोरी के साथ में, और उस बच्चे की स्टोरी 15 ईयर का एक बच्चा रहता है, उसकी स्टोरी के साथ ये आर्टिकल स्टार्ट होता है कि किस तरीके से एक मिसाइल अटैक में उसको बहुत मेजर इंजरी होती है उसके लेग्स में। फिर जिस तरीके की सिचुएशन है गाजा में कि किसी भी तरीके का ह्यूमैनिटेरियन एड इजराइल नहीं क्रॉस करने दे रहा है गाजा में, फिर कैसे बच्चा वो स्ट्रगल कर करके वहाँ पे उसको एक बेसिक रिलीफ मिलता है
और वहाँ पे एनेस्थीसिया का अरेंजमेंट नहीं होता उस हॉस्पिटल में, तो बिना एनेस्थीसिया के ही उसके ऊपर एक माइनर सी सर्जरी परफॉर्म की जाती है। जस्ट इमेजिन दैट बॉय इज 15 years old और उस पर बिना एनेस्थीसिया के सर्जरी परफॉर्म की जाती है। फिर कैसे बहुत सारी दिक्कतों के बाद उसे जॉर्डन लेकर के जाया जाता है, जहाँ पर वो उसका ट्रीटमेंट होता है और वो बेसिकली अब अपनी रिकवरी स्टार्ट कर रहा है। सो दीज आर बेसिक ह्यूमन फैसिलिटीज जो गाजा के लोगों को नहीं मिल पा रही हैं। नाउ देयर हैव बीन डिफरेंट ओपिनियन कि क्यों नहीं मिल पा रही हैं। कुछ लोगों का कहना है कि जो हेजबुल्ला और हमस के मिलिटेंट्स हैं, दे आर यूजिंग दोज सिविलियंस एज अ ह्यूमन शील्ड, इस वजह से इसराइल को इतने ज़्यादा ग्रेव या इतने स्ट्रिक्ट स्टेप लेने पड़ रहे हैं। फिर ऐसा सिर्फ एक स्टोरी नहीं, ऐसे मल्टीपल स्टोरीज को एक्सप्लेन किया गया और इन सारे स्टोरीज को अगर आप डॉट्स को कनेक्ट करना चाहें, आई विल वाइंड अप दिस पर्टिकुलर आर्टिकल इन 2.5 minutes. सो लेट्स डिस्कस दिस पर्टिकुलर आर्टिकल इन वेरी डिटेल्ड मैनर। सो किन किन चीज़ों पे फोकस करने की कोशिश की गई है कि मेडिकल फैसिलिटीज़ हैव टोटली क्रम्पल डाउन। लोगों के पास बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं है। जितने भी हॉस्पिटल्स थे, उन हॉस्पिटल्स को में से भी गाजा में 36 हॉस्पिटल्स थे टोटल, उसमें से 17 हॉस्पिटल जो है आउट ऑफ सर्विस हो चुके हैं, क्योंकि उन हॉस्पिटल्स पे या तो बॉम्ब किया गया या इसराइल ने बॉम्ब गिराए या उन पे इतना ज़्यादा जो उन पे सर्विसेज थी उनको पूरी तरीके से रोक दिया गया। इसीलिए जो 17 हॉस्पिटल्स हैं वो पूरी तरीके से नॉन फंक्शनल हो चुके हैं। और वॉर के सिचुएशन में आपको क्या होता है, नंबर ऑफ बेड्स की जो रिक्वायरमेंट होती है आपकी वो बढ़ जाती है, क्योंकि जो सिविल कैजुअलिटीज़ होती हैं और जो सिविल इंजरीज होती हैं उनको ट्रीट करने के लिए आपको एंड ऑफ द डे हॉस्पिटल्स चाहिए होते हैं। तो और गाजा में जो ये पूरा चल रहा है, किलिंग चल रही है, अक्टूबर 2023 से लेकर के अब तक क्लोज टू 41,000 सिविलियंस हैव लॉस्ट देयर लाइफ, विच इज एक्चुअली अ बिग नंबर। 41,000 इंडिविजुअल्स हैव लॉस्ट देयर लाइफ। नाउ as per the data of World Health Organization, the people who are living in Gaza, so there are 12,000 people in Gaza who actually needs the immediate medical attention, and yet only 41% of medical evacuation requests have been approved by Israel. So out of these 12,000 person who are living in Gaza, they actually need the medical assistance as soon as possible, but only 41% evacuation requests have been approved by the Israel, and without taking the approval of the Israel, you cannot move anyone out of Gaza. Now thousands of displaced people are unable to access medical care due to destroyed health facilities, restricted movement, and the extremely dangerous conditions on the ground. Now these are various reasons why people are not able to get the medical treatment, because the situation are such, there is a war going on. The ground reality is very different. The conditions are very dangerous on the ground, that no one can you cannot risk your life to get the treatment. So if you are not going to the hospital, then also you will die. If you are going to the hospital, then you will also die. So the people are in a kind of dilemma, that what are the options that are available to us. Now let's understand the situation about the people, or about the child who are below the age of 18. The kind of psychological trauma these events are going to leave on their brain. उनके ब्रेन पे इस चीज़ का क्या साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होगा, ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। अकॉर्डिंग टू यूनिसेफ, ओवर 1 million children in Gaza now need urgent mental health and psychological support. So this is one important fact that you have to keep in your mind, that and I'm not saying this is a statement by UNICEF, that 1 million is to 1 million children are there in Gaza who actually needs urgent mental health and psychological support, so that they can focus on other things as well, because these children have seen their parents have been killed in front of them, so they need a kind of a mental support and a psychological support from the various authorities. But again, the Israel is not allowing any kind of medical assistance in Gaza. Now hospitals have been destroyed, infrastructure is in